Dr. Amardeep is a young friend. When I saw him in the clinic, he said he had some groin swelling in his inner thighs, and the swelling increases on side when coughing or straining, and when he lies down he can push the swelling back into and reduces in size. This small history was enough to make a diagnosis of maybe that he is suffering from inguinal hernia. Hello, my name is Dr. Amardeep Singh. मुझे 6 मंथ से राइट इंग्वाइनल हर्निया डिटेक्ट हुआ था. बाय प्रोफेशन आई एम फिजियोथेरेपिस्ट. कुछ मिस्टेक्स की वजह से मुझे हर्निया हो गया था, तो बहुत ज़्यादा नहीं था, और लेकिन पिछले 15 डेज से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी. लॉन्ग स्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती थी. व्हेन आई वाज विद माय पेशेंट, तो मेरे प्रोफेशन में फिजिकली वर्क होता है, तो पेशेंट के वेट लिफ्टिंग में, पेशेंट को लिफ्ट करने में, शिफ्टिंग कराने में, पोजीशनिंग कराने में उनमें प्रॉब्लम होती थी. तो मैंने फिर कंसल्ट किया सेल्बी शनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर विनय शॉ से. This inguinal hernia can become very large, and in his case it was a very big hernia where the intestines and the stomach contents pops out of the groin through a small defect in the right inguinal region. At that time he was very positive about the surgery, so I'm very satisfied with the explanation or things. Then I decided to go to the surgery. Usually these surgeries can be done and to fix this hernia, and the surgery can be either a laparoscopic or an open approach. Both can be done. Usually in large hernias, sometimes laparoscopic or keyhole surgeries might be difficult. But in his case, we did an enhanced TEP. This is the latest technique where we get a lot of space and we can still do a laparoscopic repair, that is called enhanced TEP, where we do a total extra-peritoneal repair of the hernia by keyhole surgery. तो सर्जरी परफॉर्म होने के बाद में जब मैं वापस आया, विद इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स के बाद मुझे होश कंप्लीट कॉन्शियस था मैं तब. तो डॉक्टर सर्जरी के बाद मुझसे मिलने आए, सब कुछ एक्सप्लेन किया उन्होंने. तब भी मुझे एक्सप्लेन किया कि आपकी सर्जरी अच्छी हुई है. उसके साथ थोड़ा सा इशू भी था, कुछ फैट का कुछ था, उन्होंने वो भी करेक्ट किया उस सर्जरी के साथ साथ. और उनका स्टाफ है, उन्होंने भी मुझे सारी चीज़ें बताई, मुझे शिफ्ट कराया, और नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से. And he could be discharged very next day, and in follow-up also he is doing very fine and comfortable, and there is no infection. So laparoscopic advantage is that the chances of infection is very low, and not only that, the chances of hernia coming back is also lower, because in laparoscopy we can enhance the repair with a bigger mesh and with minimal access, with minimal intervention, and with better recovery and more success. Thank you.